राधे राधे आप सभी को। तो आज हम चारकोल और ग्रेफाइट दोनों पेंसिल का यूज़ करके इस ड्राइंग को शेडिंग करेंगे। ग्रेफाइट पेंसिल के लिए मैंने यहाँ पर ब्रुस्ट्रो के 12 शेड का यूज़ किया है। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो आप जो भी यूज़ करते हो आप यूज़ कर सकते हो। चारकोल पेंसिल मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले हम आउटलाइंस को अच्छी तरह से इरेज कर लेंगे। तो ये रही चारकोल पेंसिल जो हम डार्क पोर्शन के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग में आप HB R2B पेंसिल का यूज़ करोगे लाइट पार्ट के लिए। डार्क पार्ट के लिए हम यहाँ पर चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप देखते जाओ। डार्क पोर्शन के लिए मैं यहाँ पर ग्रेफाइट के 4B 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप चारकोल पेंसिल का यूज़ करोगे यहाँ पर तो थोड़े पैचेस से दिखेंगे, स्मूथली नहीं दिखेंगे, इसलिए हम ग्रेफाइट पेंसिल का ही यूज़ करेंगे।
शेडिंग हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ आप ये बता सकते हो, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी इस टॉपिक पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।